Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to session number 38 of our course on organizational theory and design. And this is the last session on our module of organizational decision making. And today we are going to talk about the fourth model of decision making, which we have been mentioning in the earlier sessions, along with the discussion of management science approach, the Carnegie model and the incremental decision process model. The garbage can model is one of the most recent and interesting descriptions of organizational decision making. The model is based on the concept of organized anarchy or organized chaos. Now, what exactly is organized anarchy and what exactly is organized chaos? इससे पहले कि हम organizations की बात करें, it will be worthwhile to understand this phenomena of organized anarchy from our daily life. एक नज़र बाहर अपने घरों से, ऑफिसेस से, कमरों से जब हम निकलते हैं, देखते हैं, what we see is a chaos. एक हजूम है ट्रैफिक का, सब लोग उस पर चले जा रहे हैं, किसी को apparently कोई होश नहीं है साथ मेरे क्या हो रहा है. Everybody is running in organizations or in some places or to some hospital or post office or to a railway station or to an airport. Airport चले जाएं, you will see anarchy. People coming and they don't really know कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, किधर क्यों अब करना है, but the things are moving. People landing in a totally new destination, don't know what to do, but still manage it. Railway stations पे भी ऐसा है, घरों में चले जाएं, looks very peaceful, calm house. Inside the issues, you will see anarchy, financial problems, relationship tensions, social problems, political issues in inside the families. ये झगड़ा, वो झगड़ा, ये problem, इसका solution, again anarchy. Go to a place like, say, a hilly area, northern areas. Apparently you will see peace, calm, but again, once you start noticing the environment, you become a part of it, you will see the same anarchy again. You will see suddenly weather change हो रहा है, लोग जो अभी बाजारों में हसल बसल थी वो एकदम से ख़त्म हो गई, बारिश शुरू हो गई और लाइफस्टाइल ही बदल गया, बारिश ख़त्म हुई, फिर बाजार throng हो गए. How people manage that anarchy, how we manage it on individual basis is not the topic of our discussion today. We are only trying to isolate this phenomena of organized anarchy or organized chaos. Chaos theory has been put forward to explain the apparently chaotic and disordered world. उसमें से कोई सेंस बनाने के लिए इस थ्योरी का जो मकसद है, इस थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन का मकसद है, that is trying to make some sense of this apparent chaos, जो बज़ाहिर एनार्की है, उसमें उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, या अगर वो ऑर्गेनाइज एनार्की भी है तो उसमें हम अपनी जिंदगी को किस तरह मैनेज करें. और chaos theory में important thing to realize in that theory is that whatever we do or whatever we don't do has consequences and far-reaching consequences. A decision made today in a family might affect someone 6 generations down the line, or a decision not made today might affect someone 5 generations down the line or 3 generations down the line. जब हमारे साथ चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट्स, इवेंट्स होते हैं, हम उनके कॉजेस को एग्जैक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज लाइफ इज नॉट लाइक सीरीज की एक कॉज हुआ, उसका इफेक्ट हुआ, फिर उस इफेक्ट ने कुछ कॉज किए,
वो पैरेलल या सीरीज में नहीं चल रहे, वो पैरेलल चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली हैं, मल्टीपल causes, multiple effects, which is leading to what is not clear. On the surface is not at all clear. आप किसी एयरपोर्ट की लैंडिंग गैलरी में बैठ जाए, you will see planes keep on landing after every 1.5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. वो लैंडिंग हो रही है, दूसरी गैलरी से टेक ऑफ हो रहा है, and things are moving. And apparently it is so difficult to imagine how it is happening, even with the aid of technology. So we the human beings, in fact all the living species, and especially human beings, because we can comprehend, we have got the intellect, we are surrounded by this anarchy or this chaos or this disorder in our daily lives. Nothing which we do is directly understandable to someone who is watching us, or even to us who is doing it. Why am I doing it? Why my state of mind is disturbed? Think over it, and maybe a thing which happened 3 days ago is causing all that disturbance in the state of mind. So chaos, anarchy is part of our life. The model which we are discussing here, the garbage can model, helps us think of the organization as a whole and the frequent decisions which are made by the managers throughout that organization. So first premise of this garbage can model is that organizations are whole entities, they are not discontinuities. So when they are whole entities, then they are comprised of people and systems which are completing that whole, and whatever decisions are made in that whole will affect the entirety of the organization. Or organized anarchy organization के अंदर भी है, which simply means that inside the organizations the conditions are uncertain. Nobody knows what is going to happen. How is this decision going to be implemented? And once implemented, will it really benefit the way people are thinking or not? So there is uncertainty inside. Mostly the organized anarchy is at its extreme in organic organizations. Mechanistic में भी हम ये नहीं कह सकते कि anarchy नहीं. But over there the anarchy is controlled. It's relatively controlled as compared to organic organizations. The mechanistic organizations are also chaotic, but the chaos in those organizations is relatively less as compared to organic organizations. ये तो हम इसको तो हम appreciate करते हैं, and we understand this, that the degree of chaos and degree of anarchy will vary from country to country, from region to region, from company to company. कुछ मुल्क हैं जिनको दुनिया peaceful country कहती है. According to the standards of peace devised by the world, they are peaceful countries, and some countries are volatile countries. So from the standpoint of from the point of view of peace, हम differentiate कर सकते हैं anarchy में. Economic conditions के लिहाज से certain countries are considered as developed or economically developed, whereas certain are considered as developing or less developed. तो वहाँ पर economic anarchy ज़्यादा होगी जो less developed है. Similarly, social indicators हैं, human development index है, health criterias हैं, primary secondary education के criterias हैं. So the level of anarchy will vary. एक ही country के अंदर different regions will be like, if we take our country at the moment, तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हालात हैं. Karachi has its own set of problems. Northern areas are facing their own problems, which are very different from the ones faced by Karachi. Punjab mein situation mukhtalif hai. So the situation of anarchy inside our country also varies. We look at India, वहाँ पर भी ऐसा ही है. We look at Sri Lanka, वहाँ पर भी आपको यही हालात मिलेंगे. So because of the uncertainty, because of the organic conditions,
Organizations are also facing organized anarchy. 3 characteristics हैं which cause and which define organized anarchy. Number 1 is ambiguity, lack of clarity. Now ambiguity या lack of clarity, confusion नहीं कहूँगा इसे, because confusion is a state of mind where you can't decide, whereas ambiguity is lack of clarity. Generally in situation, you see a person coming towards you in a bad mood. You don't know why he is in a bad mood. That is ambiguous, unless until he tells you. And he might never tell you, and you might never know why was he in a bad mood. A plane is late because there is dense fog today. Why that dense fog is today is ambiguous for a layman who does not understand the intricacies of environment and geography. The match is interrupted or is delayed or is cancelled because it is raining today. Why, after nearly history of 150 years, cricket stadiums cannot be, or cricket cannot be made free of weather is something which is a technical question, but weather and cricket जब उनका साथ होता है आपस में, they create chaos, anarchy. लेकिन उसके बीच में भी मैचेस चल रहे हैं, डकवर्थ लुईस मेथड चल रहा है, मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, डिसाइड भी हो रहे हैं. Ambiguity is around us. Ambiguity is a central pillar of our life. और इससे बड़ी ambiguity क्या हो सकती है? We don't know from where we come and we don't know where we will go. हमारी लाइफ का एक सेगमेंट पैदाइश से डेथ तक तो हमें नजर आता है, उसके इधर और उसके उधर क्या रेंजेस हैं वो हमारी नजरों से, हमारी सेंसेस से क्योंकि ओझल हैं, इसलिए हमारे लिए वो भी एम्बिग्वियस, नॉट क्लियर. फेथ है, फेथ इज समथिंग विच रिड्यूसेस और विच ओवरकम्स एनी एम्बिग्विटी. जो खौफ के ऊपर फतह है वो किस तरह हासिल होती है? फेथ से, अकीदे से, कमिटमेंट से. खौफ क्या है? एम्बिग्विटी. खौफ क्या है? अननोन. Fear of unknown is the biggest fear, and how do we overcome that is a different matter. But we cannot say that all of us are not facing ambiguity. In different life situations, at individual level, at family level, at group level, at friends level, we are facing and we are encountering ambiguity. We watch TV, we encounter 150 channels. What to watch, what not to watch is ambiguous to us. Why we are watching this particular thing, most of the cases, ambiguous, not clear. Why not that? So, pehla characteristic which explains the organized anarchy in human relations and in human living, and even in living things में आप जंगल में चले जाएं, वहाँ भी anarchy. लेकिन हम बात क्योंकि कर रहे हैं इंसानों की, because we are talking about organizations, so we will limit our discussion to human beings. So we have identified the first character. The second one is unclear and poorly understood cause and effect relations. वो भी ambiguous है. Why this is happening and why that is not happening is also ambiguous. क्या organizations में, for example, सेल कैसे बढ़ती? अगर तो ये इतना आसान है कि सेल्स फोर्स बढ़ा देने से या उनको अच्छा ट्रेन कर देने से सेल्स बढ़ जाती, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये कर लेती, करते भी हैं. पीपल ट्राई टू इम्प्रूव देयर सेल्स फोर्स एंड देयर स्किल्स, टू गिव देम मोर ट्रेनिंग, टू हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स पीपल, बट all the time it does not work. Sometimes you increase your sales force, sometimes you give them more skills, sometimes you give them more trainings, and the next 3 quarters you see your sales declining more, your sales showing a notch, a further notch of a dip. So cause and effect are not very linear in this life. They are moderated by many factors, many variables,
अगर हम सिंपल सा भी एक रिलेशनशिप देखना चाहें, रिलेशनशिप बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल, द परफॉर्मेंस of a student in the course and his grade, or the performance of an employee and his job satisfaction. ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप, हमें यही लगेगा, हम हाइपोथेसिस ऐसा ही बनाएंगे कि स्टूडेंट हु हैज परफॉर्म्ड वेल ड्यूरिंग द कोर्स, हैज परफॉर्म्ड वेल, हैज स्टडीड, हैज पार्टिसिपेटेड इन द क्लास, हैज अटेम्प्टेड क्विजेज, given assignments, will get a good grade. पर ये कॉज एंड इफेक्ट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स और आ जाते हैं, लाइक फाइनल एग्जाम, पता नहीं वो स्टूडेंट कैसा दे। फाइनल एग्जाम मोस्टली रिटन होता है, मे बी हिज रिटन स्किल्स आर नॉट एज गुड एज हिज वर्बल स्किल्स, मे बी ही हैड अ बैड 2 or 3 days before the exams, maybe he had a bad day during the exam, maybe he could not clearly put forward his point of view to the examiner, many things. Job performance or satisfaction ka relationship moderated by many factors, working conditions, personality of the boss, culture of the company, performance appraisal systems, reward management systems, feedback, monitoring, motivation, all these things are moderating one apparently simple cause and effect relationship. So there is no simple cause and effect relationship in real life. Cause and effect relationships are constructed in models, which are an attempt to capture and make sense of the life. Models are not prescriptions. Models or theories are not prescriptions. They are not telling us what to do. They are trying to explain what we are doing and trying to make some sense of it, so that if we make some sense of what we are doing, we do it in a better way, we do it in a more managed, organized way. So दूसरा characteristic भी हम पे clear हुआ organized anarchy का, cause and effect चीज़ों के बहुत ही poorly understood हैं. Typical chaos theory का literature gives an example of a butterfly which is moving its wings in Beijing, China. तो वो कहते हैं कि जब एक तितली अपने विंग्स को फ्लटर करती है इन बीजिंग, तो उससे जो एयर करंट जनरेट होती हैं, दे कैन इफेक्ट द डिस्टेंस टिल शिकागो. That is the level of chaos which we create when we do something. When we even sneeze, the amount of viruses and bacteria which we throw in the environment are uncountable. So our sneezing has effect. It can infect somebody. It can pollute the environment. Our simple process of breathing is throwing carbon dioxide constantly in the environment, is throwing other material in the environment. We can't see it, but it is in the environment. तीसरा characteristic of organized anarchy, and especially related with organizations, is the reason that organizational positions experience turnover of participants. ये जिंदगी में भी applicable. पहले हम इसको जनरल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम इसको यूं कहें that life positions experience turnover of the participants, तो फिर बात हमें जनरल लाइफ पे समझ आती. एक खानदान है जिसमें एक दादा हैं, एक दादी हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं. 30 साल बाद दादा और दादी शायद ना हो. So there is a turnover. Now that dada or dadi role is taken by those people who were parent 20-30 years ago. So position change हो गई. अब वो जिस तरह घर पहले चलता था वैसे तो नहीं चलेगा, because new people have come up. जो 50 साल पहले गवर्नेंस में लोग थे, आज वो नहीं है. It's a different set of people. ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग आते हैं, जाते हैं, चाहे 5 साल रहें, 6 साल रहें, 20 साल रहें, but the turnover keeps on happening.
that adds to the issue of organized anarchy, because if a group of people remains together forever, then the situation is different, but we know that this does not happen. वो आपको group की stages याद होंगी from your initial courses in management and OB. When a group is formed, first of all, it is formed, then there is norming, and then there is storming, and then performing. And finally, there is always the stage of disintegration. Because every group which is formed will end one day. And it has been happening since the human beings started interacting with each other. And it will keep on happening till the human beings and are inhabitants of this world. So that constant turnover adds further to the organized anarchy about which we are talking. Then how to translate? Now we have translated the general life problems into organizational issues. जब हमने कहा पोजीशन लाइफ में चेंज होती हैं लोगों की, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी टर्नओवर होता है. जब हमने कहा कॉज एंड इफेक्ट क्लियर नहीं है जिंदगी में चीज़ों में, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है. और जब हमने कहा एम्बिग्यूटी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसी है. अब कुछ जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्बिग्यूटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बहुत ज़्यादा एम्बिग्युअस है, जहाँ पर हालात, एनवायरनमेंट इज डायनामिक. कुछ में निस्बतन कम है. बट we cannot say that there is a part of the world which is free of ambiguity and which has a linear cause and effect relations occurring all the time. We cannot say that. Now, decision making is not seen as a sequence of steps in the garbage can model. How can we decide something as sequential steps if there is so much ambiguity and if there is so much unclarity? So under the garbage can model, decision making is not seen as a series of sequential steps. Problem identification and solution may not be connected. These are all elements of this garbage can model. जरूरी नहीं है कि आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, 6-8 स्टेप से गुजरें, फिर उनके अल्टरनेटिव्स बनाएं और उन अल्टरनेटिव में से एक पिक करें और सोल्यूशन मिल जाए. वही हमने जो बात की, life is not in linear cause and effect, that you picked up a problem and then you solved it. No. An idea may be proposed as a solution when in fact no problem is identified. जब एक नया आइडिया किसी भी जगह फ्लोट किया जाता है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्स में फ्लोट किया जाए, वरना तो प्रोएक्टिव आइडियाज आएंगे ही नहीं. There will only be reactive ideas which are in reaction to some problem. So what about proactive thinking, where you are making decisions or where you are proposing solutions for something which has not happened? So an idea can be proposed as a solution where no problem exists. The problem may exist but never generates a solution. Decisions are the outcomes of independent streams of event within the organization. Now, इसमें 4 streams हैं जो हमने identify की हैं. But before we talk about these streams, first let's quickly again try to understand what this garbage can model is telling us. It is telling us that we cannot all the time solve our problems in a sequential manner. जो हमने individual decision making से देखना शुरू किया कि problem identification stage, फिर problem solution stage, फिर implementation stage. तो गार्बेज कैन में पहली चीज तो ये डिफरेंस है कि ये सीक्वेंशियल adoption of decision making process is not essential. It is quite possible that you propose a solution, an idea which becomes a solution to a problem जो हमें प्रॉब्लम कभी लगी ही नहीं, या एक प्रॉब्लम है जो परसिस्ट कर रही है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या लो रेट ऑफ एजुकेशन या पॉवर्टी कह लें. ना पॉवर्टी इज ए प्रॉब्लम जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है. इस वक्त इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी आर ग्लोबल इश्यूज. वी कैन नॉट target our country
that this country has given us nothing, देखें महंगाई कितनी है, ठीक है महंगाई बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हमें उसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है. अगर तो महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है, then the scenario is different. But what is happening in India, what is happening even in countries, developed countries of the West, वो भी हमारे सामने. So poverty is increasing in the world. That is a problem which is persisting. उसके लिए कोई solution नहीं. There are solutions, but they are not working. So those solutions which are not working for the last 50, 60 years are probably not going to work in the coming time. तो कोई different approach इख्तियार करनी पड़ेगी. बीमारियां हैं बहुत सी, कोई इलाज नहीं है उनका. Problems solution के बगैर हैं. कभी कभी ब्रेक थ्रू हो जाते हैं, सोल्यूशन पहले आ जाता है. जैसे पेनिसिलिन डिस्कवर हुई, तो वो रिसर्च इस मकसद के लिए उस दिन नहीं हो रही थी कि आज हमने को एंटीबायोटिक डिस्कवर करना है. रूटीन की रिसर्च थी. पेनिसिलियम मोल्ड गिरा बैक्टीरियल कॉलोनीज पे, इत्तेफाक से गिरा, और साइंटिस्ट ने नोट किया कि वो बैक्टीरियल कॉलोनीज सारी की सारी साफ हो गई. There was something in this penicillium mold which has killed these bacteria. यहाँ से इस accidental discovery से, which was not even a solution, which was not even an idea, which was just a chance, वहाँ से antibiotic discover कर लिए गए. वो problems बगैर identify हुए solve होनी शुरू हो गई. So this is how life is basically composed. And this is how the garbage can model tries to take care of the organizations. But we cannot treat them as very different entities than normal social entities. Or decisions are the outcomes of independent streams of events. 4 such streams of events are identified for organizations. Number 1 is called the problem itself. Now problem here under the garbage can model, जैसे हमने पहले कहा, may not be solved when solutions are given. पर ये कॉमन सेंस है. हम solutions तो देते हैं, but do we actually solve the whole problem? Or do we just give symptomatic relief? Or do we just give relief to segments of that problem and not the overall problem? जैसे मैंने poverty का जिक्र किया. Poverty के लिए बहुत से IMF and World Bank and this bank and that bank and this donor agency and that donor agency pockets में काम हुआ भी, but can we say that the problem is solved? No, it is not solved, in spite of the fact that many solutions by many thinkers, many countries, many institutions, many organizations have been proposed. In spite of that, the problem is escalating, बढ़ रही. So एक तो stream of event which we need to understand is the nature of the problem itself. That problem चाहे वो structured है, चाहे वो non-structured है, चाहे वो programmed है, चाहे वो non-programmed है. ज़्यादा chance ना solve होने का non-programmed या novel या unique problems का. Second stream of event is the potential solutions. Now potential solutions से हमारी मुराद है that solutions are basically what? Solutions are ideas. An employee may be tempted to attach an idea to a problem, and he will therefore look for such problems which can be attached with that idea which he has proposed. For example, and you must be remembering when we were talking about structures, we came up and described 3 or 4 symptoms of structural deficiency. एक उनमें से था that the decisions taken by the organizations will be delayed. दूसरा था the organization will be slow to respond to the changes in environment. And the third one was that there will be too much conflict inside the organization. Now, somebody has proposed restructuring because of these, one of these symptoms or a combination of these symptoms. When that employee, when that participant has proposed restructuring, he can now attach various other problems which he thinks can be taken care by the restructuring.
So potential solution जो एक है, that can be attached with many other problems which can be solved by restructuring. That is another stream of event which is not very clear and which is not very straightforward. The third one is the participant itself, an organizational participant, an employee, him or herself, because the problems and solutions which are considered and tackled by one manager can differ from the ones identified by another manager, because the two are different people and their perceptions are different. So the problems which one person sees might not be visible in that clarity to the other, and the solution which another person is suggesting for those problems might not be very easily visible to the person who is seeing the problems. क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हमारे, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके से हमें परवरिश दी गई है, सो हमारी वैल्यूज़ और बिलीफ मुख्तलिफ हैं। अब जब वो मुख्तलिफ हैं तो हमारे सोचने का, काम करने का, कॉग्निशन का तरीका मुख्तलिफ है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ऑर्गेनाइजेशंस में लाइफ की तरह आम लाइफ में भी लोग फिक्स नहीं हो जाते, छोड़ देते हैं अपनी पोजीशंस, चले जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, पीपल कम एंड गो। सो अ मैनेजर हु वाज जस्ट देयर बिफोर अ न्यू मैनेजर केम was using his perception, his paradigm to identify and solve the same problems which the new managers would be doing in a quite a different way. So ये खुद एक problem anarchy में create होती है, because people come and people go, and even if they don't go, they remain together, they have different perceptions. The fourth stream of events which is considered in the garbage can model is the choice opportunities. Now, occasions when organizations actually make decisions. ऐसा तो नहीं है कि organizations actually decision making moment पे आती नहीं। जब वो कोई contract sign करती हैं, या आप hire करते हैं नए लोगों को, या a manager who happens to learn something from a competitor and tries to implement in the organization, एक plant नया बनता है, capacity आप बढ़ाते हैं अपनी, shift increase करते हैं, ये सारे वो occasion हैं जहाँ पर you are actually making a decision, where the organization is actually making a decision. Now here, the manager who happens to learn of a good idea may suddenly become aware of a problem to which he can apply that idea, जो हमने पहले भी आपसे जिक्र किया potential solutions में, और choice opportunities यूं create होती। अब वो choice opportunity किसी manager ने create की, किसी ने नहीं की। किसी इदारे में वो choice opportunity create करने वाले लोग ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। So these four events which we have identified, the problems, the participants, the potential solutions, the choice opportunities, they all add to the organized anarchy. Imagine the process of filmmaking. जो movies हैं, motion pictures, जब ये बनती हैं, can you imagine how are they conceived and how are they filmed and how they are screened? लगता तो ऐसे है ना जैसे एक प्रोसेस स्टेप्स में हो रहा है। पहले आइडिया कंसीव हुआ, बेसिक थीम आई स्टोरी की, उसके बाद फिर स्टोरी राइटर ने स्टोरी लिखी, फिर स्क्रिप्ट राइटर ने उस स्टोरी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखा, फिर सिचुएशंस के ऊपर म्यूजिक बना, शायर साहब ने सिचुएशन के मुताबिक शायरी की, कंपोजर ने सिचुएशन को, शायरी को, फिल्म के प्लॉट को देखते हुए कंपोजिशंस बनाई, उनको देखते हुए सिंगर्स को सिलेक्ट किया, शूटिंग शुरू हुई, फिल्म के टाइटल से लेके एंड तक शूटिंग हुई और फिल्म रिलीज हो गई। इट इज नॉट दैट सिक्वेंशियल एज इट सीम्स, एंड पीपल हु आर इन द field of production and in the field of producing or recording events would understand that it is total anarchy. आप सेट पे चले जाएं या आप प्रोड्यूसर साहब जब फिल्म शुरू होती है, sometimes it starts from the first shot. पहला शॉट वो
रिकॉर्ड कर लेते हैं, पिक्चराइज कर लेते हैं, देन दे थिंक ऑलराइट अब इसको हमने यूज कहाँ करना। कई दफा उसके इर्द गिर्द स्टोरी बनती है, कई दफा एक नंबर, एक गाना, एक सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, एंड दैट बिकम्स द प्रिकसर और स्टिमुलस फॉर द होल फिल्म। और कभी कभार बिल्कुल ऐसा भी होता है कि बनी बनाया स्टोरी और उसके ऊपर स्क्रिप्ट और फिर फिल्म की शूटिंग। सो देयर इज नो वन वे ऑफ मेकिंग अ फिल्म, देयर इज नो एंडिंग एंड देयर इज नो स्टार्टिंग एज सच, जिसके हम यूज टू हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट अ प्रोजेक्ट विल कम, सो वी विल फर्स्ट make a feasibility, then we will take approvals, we will raise funds, and then we will acquire resources. तो उसके बाद हम implement करेंगे अपना idea, and then the project will be in work. Movie is a project, but it is a very fluid form of project. यहाँ पर chaos, ambiguity extreme पे. And in our life in general, we see that we do not really or we cannot really plan it that way, that smoothly. जिस तरह हमें कई दफ़ा टाइम मैनेजमेंट की बुक से पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को यूं प्लान कर लें, कॉन्टिजेंसीज हैं, पता नहीं क्या हो जाए कल को। सो फिल्म मेकिंग की एग्जांपल, और बहुत ही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट बिजनेस किए हैं, उन मूवीज को अगर आप उनकी हिस्ट्री ऑफ मेकिंग पढ़ें तो आपको पता चलेगा दे स्टार्टेड ऑफ a very ordinary idea given by a person जिनको कोई जानता भी नहीं था, and then somebody picked that thread and he started weaving that with other millions of threads and a movie came into being. So the stream of events which we have discussed and the decisions which are made in organizations based on the garbage can model are such that you can never know whether the solution which is given is actually a solution to address a problem, or it is an idea which will become a solution to a problem which has never occurred, or what will happen to the persistent problems which are carrying their weight along the company without being solved. And all of this is happening. People are joining the organization, people are leaving the organization. The organization is carrying on. So it is called garbage can because it is exactly like a garbage can. एक कूड़े का जो डिब्बा है, उसमें आपने क्या फेंका, क्या निकाला, nobody knows. Similarly, organizations में क्या चीज किसको, इसका मतलब ये नहीं है कि organizations को खुदा न खास्ता कूड़े का डिब्बा है, no. मतलब ये है कि उनका क्या डिसीजन क्या बन जाए, nobody knows. क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन और डिसीजन मेकिंग इतनी सीक्वेंशियल है जितनी टेक्स्ट से हमें लगती है? गार्बेज कैन मॉडल इज ट्राइंग टू टेल अस दैट इट इज नॉट लाइक दैट. Sometimes solutions can be proposed before the problem is identified, and sometimes the problem is identified but there is no solution for that problem. आप उसे रिसोर्स लिमिटेशन कह लें या कुछ भी कह लें. तो फिर यहां पर डिसीजन मेकिंग किस तरह की जाती है? यहां पर डिसीजन मेकिंग ऐसे ही है दैट इट इज लाइक ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. आइडियाज आर प्रपोज्ड, हिट एंड ट्रायल, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन में चीज सेटल हो जाती, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर न्यू रूटीन. और इसी तरह से आप नई रूटीन्स बनाते हैं, नई कैपेबिलिटीज और नए रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, नई स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं. Garbage can model is an ideal way of looking at organizations which are very, very organic, which are surrounded by a very complex, very turbulent environment. But generally, we should not assume that anarchy is less in mechanistic organizations. It is relatively less, but it is there. Now that we have talked about the decision-making process in organization in detail, I would like to conclude this module by describing two special decision circumstances to you which are very, very relevant in today's environment, one of which we have already discussed, but not in that context. हमने learning organization के context में तो discuss किया, but
There are various types of industries as we know. एक तो इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल है, जिसके ऊपर कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, कुछ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ मैच्योर हो रही हैं, कुछ डिक्लाइन कर रही हैं. लेकिन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो टाइप्ड अकॉर्डिंग टू देयर टाइपोलॉजीज ऑफ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैच्योर इंडस्ट्रीज को तो हमने बात की, जहां पर सेल्स रुकी हैं, मजीद मार्केट शेयर नहीं मिल रहा. ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, और उन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में एक टाइप है विच इज कॉल्ड हाई वेलोसिटी इंडस्ट्रीज, जो बहुत फास्ट ग्रोथ एनवायरनमेंट हैं, या बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं, लाइक आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ हाई वेलोसिटी इंडस्ट्री. आप एक मोबाइल फोन आज देखते हैं, 6 महीने के बाद वो ऑब्सोलीट ही नजर आता है, नजर ही नहीं आता. 3 महीने 4 महीने के बाद नए नए मॉडल्स, वर्जन्स, अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. इट इज a highly volatile and highly fast industry. यहाँ पर इस किस्म की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैन नॉट रन इन सीक्वेंस. Here the problem identification and solution will run parallel to each other, because the industry does not have the time to form neatly designed sequences. जब तक वो ये sequences बनाएंगे और डिसीजन ट्रीज बनाएंगे, तब तक कंज्यूमर किसी और कंपनी से मोबाइल या मोबाइल प्रोडक्ट खरीद चुके हों. मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग ए मेजर डिसीजन फेज. ये नहीं है कि आपने एक प्रॉब्लम पकड़ी और फिर आपने उसके 6-8 अल्टरनेटिव्स बनाए, बल्कि ड्यूरिंग ए डिसीजन फेज आप 7-7 अल्टरनेटिव भी बनाते जाएंगे, डिस्कार्ड करते जाएंगे, अपनाते जाएंगे. So high velocity environment is, or high velocity industries is one type of environment which is very much like learning organization, where the sequential approaches of decision making will not hold, where the process of implementation and process of formation will be occurring simultaneously. ये वैसे ही है ना, जैसे strategy making में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन विल अकर सेपरेटली आफ्टर प्लानिंग एंड एनालिसिस एंड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद कंसल्टेंट्स एंड इंटरनल एनालिस्ट्स. आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, बनने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटर्स को दे देते हैं. सो हियर, यहां पर हम कह सकते हैं दैट फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर अकरिंग इन सीरीज. और इन ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज वेन एवर यू स्प्लिट एक्शन एंड थॉट, प्रॉब्लम तो आएगी. बट वेन यू डोंट हैव द टाइम टू डू सो, क्योंकि जहाँ प्लानिंग हो रही है, एनालिसिस हो रहे हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं, स्टेबल एनवायरमेंट्स हैं, मैच्योर इंडस्ट्रीज. बट व्हाट अबाउट स्मॉल मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट्स? दे डू नॉट हैव टाइम टू डू एनालिसिस एंड टू हायर अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, एंड बिकॉज उनका जो पास्ट है वो इतना टर्बुलेंट रहा है कि उसकी बेस पे वो फ्यूचर को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं. So their future is not going to be a one-point future like the mature organizations. Their future is multi-point future. उसको आप कैसे construct करेंगे? So their problem identification and solutions will run parallel to each other rather than occurring in series. And the second special circumstance which I would like to highlight here in the context of decision making, the circumstances तो नहीं मैं से कहूँगा, it is a phenomena, and that phenomena is called the escalating commitment phenomena. General management की books में you will find a mention of the issue of escalating commitment. It basically means that you make a wrong decision and you come to find out, you find it out that it is a wrong decision, but you still persist with it. अब इसकी कई reasons हो सकते हैं. Maybe you persist with it because it was your idea. Maybe you persist with it because your image will be tarnished if you confess openly that it was a wrong decision. Maybe you persist with it because it was based on some political maneuvering and it will now expose you. Maybe you will persist with it because it suits you, socially, economically, financially.
इसलिए आप उसके साथ परसिस्ट करेंगे। बट बेसिकली हम जब डिसीजन बनाते हैं हम समझते ये हैं कि शायद ये बेस्ट डिसीजन। अगर हम गौर करें, हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब हम जहन में सोचते हैं या हम लोगों से डिस्कस करते हैं, हमें 5-6 आइडियाज़ मिलते हैं, उनमें से एक हमें क्लिक कर जाता है और फिर हमारी सारी की सारी कमिटमेंट उस डिसीजन के साथ हो जाती है, चाहे वो हमें रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन पे ले जा रहा हो। बट वी परसिस्ट with a failing course of action. That is escalating commitment. Not commitment in that sense which we use, but commitment with this decision, not with the company. Because अगर तो कंपनी से commitment होती तो फिर एक wrong course of action पे हम जानते हुए ना चलते. Escalating commitment usually comes from personal and political reasons. But every one of us has his or our own personal benefits and advantages in front, has his or her own political, economic, social motives. So we cannot claim that organizations will be free of this phenomenon of escalating commitment. Ye hoga. What is the remedy or what is the solution to such an issue of escalating commitment? If you find out yourself that psychologically you are doing you are supporting a failing cause, the only thing which we can do is that we adopt learning approach model, learning organization model, जहां पर आप failing course के साथ commitment नहीं रख सकेंगे, because you are not the only person, or even if you are a group, your group is not the group which is trying to win it from another group. You are working, all of you are trying to improve the organizational performance. आपका फोकस आपका डिपार्टमेंटल फोकस नहीं है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका फोकस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे जब आपको लगेगा दैट यू आर फॉलोइंग अ फेलिंग कोर्स, आप पीछे हट जाएंगे, बिकॉज यू विल नो दैट द होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल फोर्स यू टू रिलिंक्विश दैट फेलिंग कोर्स ऑफ एक्शन। एस्केलेटिंग कमिटमेंट को भी ब्रेक करने के लिए, इस टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए, द बेस्ट अप्रोच इज द लर्निंग अप्रोच मॉडल which we have already discussed. So, ladies and gentlemen and dear students, for that we come to the end of our model on decision making. And as you know, we started from individual level of decision making, because as a microcosm we have to understand things occurring at individual level before we apply them to group or organizational level. और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने बॉन्डेड रैशनैलिटी और इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को काफी डिटेल से डिस्कस किया, और उसमें हमने देखा दैट नॉट वन पर्सन कैन नॉट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। और आहिस्ता आहिस्ता जब हमने ऑर्गेनाइजेशंस पे बात की तो हमें वहां पर भी ये पता चला दैट वन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। देन वी, इफ यू लुक एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री, अगर हम यूनिट ऑफ एनालिसिस को ह्यूमन बींग से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन तक ले आए, ऑर्गेनाइजेशन से फिर हम क्लस्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ले आए, इंडस्ट्रीज पे ले आए, इवन देन द इंडस्ट्री विल नॉट हैव द होल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं हो। सो दैट इज वन pitfall, or that is one constraint of decision making, that our information will not be perfect. इसलिए हम बॉन्डेड रैशनैलिटी के फ्रेमवर्क में रहते हैं, चाहे हम इंडिविजुअल हों चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें इंडिविजुअल में हमने देखा कि बॉन्डेड रैशनैलिटी when repeatedly done over time with experience, it can lead us to intuitive decision making. And in organization we saw various approaches. We saw the management science approach, we saw the incremental process approach, we saw the Carnegie model approach, and in this session we discussed the garbage can approach. Or as a student of organizational theory and design, it should be now clear in your mind that organizations will not adopt one of these models, but they will have a combination of all of these models. They will try to synthesize their decision-making process according to where what is suitable. For example, problem identification phase में कहीं पे Carnegie model helpful होगा, कहीं पे
इंक्रीमेंटल स्टेप प्रोसेस मॉडल हेल्पफुल होगा। कहीं पर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफ दी ऑर्गेनाइजेशन इज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और इफ इट इज ए वेरी फ्लूइड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह मैं फिल्म मेकिंग की एग्जांपल दी, वहां पर सॉल्यूशंस पहले बनते जाएंगे, प्रॉब्लम्स बाद में आइडेंटिफाई होती जाएंगी और साथ ही साथ सॉल्व भी होती जाएंगी। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, depending on the nature of your business, depending on the nature of your personnel, your HR, your human resources, depending on the nature of your environment, depending on the size of your company, the history, the age of your company, where your company is located in the organizational life cycle, where your products are in the product life cycle, where your industry is in terms of functional groups, like fragmented है आपकी industry या mature है या growing है या high velocity है या declining है, depending on all of these hosts of variables and many, many more, because we have said that we cannot know everything. Cause and effect are not sequential, they are not very simple, there are many, many moderating variables. So we cannot highlight all those moderating variables, but we have seen that there are many. So depending on the situation, our decision making process, our decision making, our problem identification process, our problem solution process will vary, will differ. So there is not one ideal way of making decisions. The decision making will depend on our situation, on our context. कोर्ट में जिस तरह होता है दैट यू प्रोड्यूस्ड एविडेंस एंड आपने गवाहियां लाए, आप एविडेंस लाए एंड द कोर्ट डिसाइडेड, लेकिन वो भी आप देखेंगे कि क्रिमिनल सिविल केसेस में फर्क, और क्रिमिनल की भी नौयत है केसेस की। सो वहां पर भी वी कैन नॉट से दैट द एनार्की इज मिसिंग, वहां पर भी ऑर्गेनाइज एनार्की है, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट एस्केप ऑर्गेनाइज एनार्की। इवन एट आवर इंडिविजुअल बॉडीज, what is happening inside and how it is happening we don't know, but we are carrying on our life with it. So with that we end our module on decision making. We'll inshallah see you next time with our next module. Till then, it is Khuda Hafiz. Thank you very much.